And chemical energy is also the stored form of energy. Okay, so it is stored in the in the form of chemical in cell or batteries. Okay, Mm, even yes. electrochemical cells are also involved in making one form of energy transfer to another form of energy. Okay. Um, Elastic potential energy. Then we discuss elastic potential energy that is stored in any elastic material, right? When we stretch or when we compress, then the stored form of energy is called elastic potential energy, right? So Yes. this is all about we discussed. But yes, we also discussed the transfer form of energy, right? That is the sound energy, light, electrical. Okay. Uh, Mainly the these forms of energies are in they travel in the form of waves. That's why they are stored. Sorry, they are transferred energy. Okay. Acha, Mm, when we talk about the thermal energy or heat energy, okay, so it can be stored or transferred. Okay. If the heat is stored, so it can be stored for a very short span of time. Okay. And when we say it is transferred, so obviously from one body to another body, when there is a temperature difference. For example, if one body is having 10 degrees Celsius and another body is having 20 degrees Celsius. So obviously the heat always flows from higher temperature to lower temperature. If there is a temperature difference between two objects, then the heat transfers takes place. Okay. yes. Uh, then we uh, then we talk about the nuclear energy, right, in the form of the rays, right? And nuclear energy involves two processes. One is fission and one is fusion, right? So splitting of a larger, nucleus into a smaller ones is called the fission, and making or joining the smaller nuclei or atoms to make the larger one is covered in fusion, right? So this is we did, and then we had a discussion around how energy moves between stores. So there's always work done involved, right, in the form of the mechanical way, right? So energy can be, can move from one store to another store in the form of the mechanical way. What do you mean by mechanical way? Like manually, it's hard. Manually, no, it's not a technical term to describe the mechanical way. The work must be involved, right? Okay, the work must be involved in moving the or in transferring the energy. So in order to transfer the energy, there must be the force that is applied to one object. Okay, the force can be applied through many ways, right? Maybe if we store the steam in any container, okay, so the due to the steam inside the container can, apply a force to its surrounding. Okay, are you getting my point? What I'm trying to say? Yes. Yes. So can you elaborate it? Can you explain it more in detail, or can you repeat it? Sorry. How can I say the work is involved in transferring energy from one store to another store? Like when we up, apply Mm-hmm. uh Force, okay. force, like When we apply force to any object, yes, it definitely it will move. Okay. But hmm, do you think we apply through our hands only, or can we apply force in no, different way? we can apply it in electrical In way. electrical way as well, right? Okay. Acha, we can apply through magnetic waves. Okay. For example, you must have heard about that through magnets we can apply force. है ना ऐसा ही है. If we want to Hmm. if we want to move any object,
if we can create a magnetic field around that object, and then we can, make it move from one point to another point, okay, due to the concept of repulsion or attraction, okay, right? If there's any iron piece or object that can be attracted towards a magnet, so yes, we can move it to using the magnet. So again, this is also called as work done, because work done means that you want to move one object from one point to another point. Okay, you want to move the object from one point to another point. So there is always a force needed. Are you getting my point? There's always the force Yes. needed to move that object. So force can be applied, by using hands. Number one, okay. Source can be hand, okay, and source can be a magnet, okay. अच्छा, source can be Mm. a steam. Steam से भी हम कर सकते हैं. Steam. How can I say the steam can do the work? Sorry. How can I say steam can do the work? Um, like. अच्छा देखो, हमें एक चीज को मूव करना होता है, राइट? हमें किसी चीज को Hmm. मूव करना है. तो आपने यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट के कुछ हमारे पास ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो कुकिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं. उसके अंदर हम स्टीम को स्टोर करते हैं, ठीक है, राइट? Yes. तो द स्टीम इज वर्किंग, राइट? द स्टीम इज अप्लाइंग फोर्स टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है, ऐसा ही Hmm. है. ठीक है. सो स्टीम कैन बी स्टोर्ड इन वन टाइप ऑफ कंटेनर, ठीक है, जो नॉर्मली हम उसको प्रेशर कंटेनर भी कह सकते हैं और प्रेशर कुकर भी कह सकते हैं, राइट? ओके, Yes. ठीक है. सो देयर इज अ पॉट, राइट? और वो कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, वी सप्लाई द हीट, ठीक है. सो व्हेन द हीट इज गिवन टू दैट कंटेनर, तो द कंटेनर boils that water, ठीक है. The water is there in the pressure cooker uh, uh, or what should I say, pressure vessel कह सकते हैं, ठीक है, ओके, राइट? Hmm. तो आप अब उसके अंदर क्या कर रहे हो, when the water is added in that container, when you supply heat, what will happen, the water will get boiled, ठीक है, and the steam will be produced, ठीक है. So the steam will be inside that container. So what will steam do? The steam is applying force, right? The steam is applying Yes. force. और अगर ज्यादा steam अगर उसके अंदर store हो जाती है, and there is no way out for the steam to come out, ठीक है, so what will happen? क्या होता है प्रेशर कुकर, फिर क्या हो जाता है अगर उसके Um. अंदर lot of steam is formed and there is no way for the steam to come out, so what will happen? The it will burst. Yes, it will burst, okay, ठीक है, all right, excellent. Okay, so now let's talk about energy, law of transfer of energy or law of conservation of energy, ठीक है. Law of conservation of energy, ठीक है. So what do you think if I have yes, if I have this box, right? And in this box
Mm, one side is representing input and one side is representing output. Okay. And inside this box, I'm calling it uh, I'm calling it a fan, let's say. Okay, fan. So what is the input of the fan? G. The input of the fan is input is going to be electrical energy. ऐसा ही ठीक है. When we give the input to the fan, so what will happen? It performs its function, right? Say, right? So what will be the output? What do we want from fan? What do we want from fan? What type of or what form of energy do we want from fan? हम क्या चाहते हैं फैन से क्या आउटपुट मिले हमें? थर्मल एनर्जी. हमें हम डू वी वांट के फैन जो है वो हमें हीट दे दे. वी डू नॉट वांट द हीट फ्रॉम फैन, राइट? अच्छा, डू वी वांट the movement of the fan? Yes, we want movement of the fan, but through movement what will happen? There will be the sound. Sorry, sound energy तो हमें चाहिए तो नहीं ना. ठीक है. So we want wind energy. What do we want? Wind energy. And how will you get the wind energy? When the fan moves. Fan moves. ठीक है. So electrical energy is converted to kinetic energy, right? ठीक है. Electrical energy is converted to kinetic energy. And recall the concept of kinetic energy, where the kinetic energy is involved when the object moves, right? And kinetic energy जब मूवमेंट हो रही होती है कहीं भी तो हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे. ठीक है, राइट? If it is moving with a greater speed, it will have more kinetic energy. If it is moving with lesser speed, it will have less kinetic energy. ठीक है, right? Yes. So what is the input of the fan? Electrical And energy. that electrical energy is, Yes, we supply electrical energy, right? Electricity, we supply electricity. That is the electrical energy, right? And what do we want from yes. fan? We want wind. And how will we get wind energy? When the fan moves. Okay, will we be Yes. able to get the wind energy without its movement? No, we won't be able to No. get the uh yes, we won't be able to get the wind energy, okay, without its movement. So kinetic energy must be involved in this process. Okay. All right. So input output diagram or energy flow diagram that tells that what is the input and what is the output and what is the name of the device. So now here the name of the device is generator, right? So what is the input of the generator and what is the output that we want from generator? I'm not saying that what are the possible outcomes of the generator. Okay, there could be
one more than one outcomes, right? Or what more than one output of the generator. But I am saying that what is the useful energy that we want? Okay, useful energy is the energy that we want. Okay, and Yes. the another way or another energy that we do not want is called the useless energy or wasted energy. Okay. So Hmm. what is the input of the generator? How generator works, or on what thing the generator works? Yes, give it a. Generator. Hmm. Uh, it works for um, to use electrical energy. Uh, no, it gives electrical energy, but what is the input of the generator? That क्या चीज? like we give अच्छा, what do we, अच्छा बैटरी, अगर बैटरी पे है तो बैटरी पे हम लोग क्यों नहीं चला लेते वो कोई भी चीज? Why do we need a generator? because the energy हम्म, must be transferred. ठीक है, सो देखो आउटपुट तो आपको मिल गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही है, Hmm. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। Hmm. इनपुट आपका क्या होगा? Chemical. यस, गुड, केमिकल एनर्जी। Hmm. व्हाई? बिकॉज we add a fuel, right? Chemical energy, okay? Fuel, ठीक है, chemical energy, because we add a fuel, we um you know there's a tank, right? And that fuel is burned, and then the lot of steam is created. This is how different components of generator work, and then the electrical energy is produced, okay? ठीक है, so Hmm. Yes. what is the input energy of the generator? Chemical energy, and the output is going to be the electrical energy, Electrical ठीक है? All right, so do you think there could be other forms of energy? So yes, one is useful energy, and another should be wasted energy. Is this clear? wasted. Wasted energy, Yes. सही है, तो what do you think, what should come in the useful energy? So it depends on on the device, ठीक है? Which device are we using? If we are using a bulb, right? If we are using a bulb, सही है, so we want the light, ठीक है? We do not want the thermal energy from the bulb. हम ये चाहते हैं कि बल्ब जो है वो हॉट से हॉट होता रहे, ठीक है? हम ये तो नहीं चाहते ना, ठीक है? सो useful energy, the energy we want, the Hmm. energy we want, ठीक है? And wasted energy, the energy we do not want, okay? The energy Yes. we do not want. And where does it go? कहाँ जाती है फिर ये एनर्जी कहाँ जाएगी भाई? Surrounding. सराउंडिंग में, एक्सेलेंट, गुड गुड, वंडरफुल, ठीक है? सो दिस energy goes to surrounding, ठीक है? We also call it dissipated energy. We also call it dissipated energy.
right? ठीक है, we also call Yes. it dissipated energy. Now you are going to tell me all energies, ठीक है, एज अ आउटपुट एनर्जी. अच्छा, वेस्टेड और यूजफुल दोनों ही किसकी टाइप्स हैं? आउटपुट की हैं. ठीक है, यूजफुल Hmm. और वेस्टेड दोनों ही आउटपुट में आएंगे, इनपुट में नहीं आएंगे. ओके, ठीक है. Yes. नाउ आई हैव अ बल्ब. ठीक है, Sorry. I have a Bus. bulb, right? The Bus. input energy is what? And what are the output energies that are possible? और जो यूजफुल होंगे ना, उसका आपने ख्याल रखना है, एरो, एरो का भी. ठीक है. अगर उसमें चलो वो मैं बाद में बताऊंगा कि एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, अगर अच्छा बल्ब है तो उसकी उसकी जो वेस्टेड एनर्जी है वो कम होगी. ठीक है, और अगर उसकी एफिशिएंसी कम है तो उसकी वेस्टेड एनर्जी ज़्यादा होगी. ठीक है, जितना कोई Hmm. कंपोनेंट एफिशिएंट होता है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, उतना ज़्यादा आपकी यूजफुल एनर्जी ज़्यादा होगी. ओके. सो व्हाट इज द व्हाट कुड बी द आउटपुट एनर्जी? ये आपने नाम मुझे बताना है, क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या क्या है. Light energy. अच्छा, इनपुट तो पहले बता दें. इनपुट में क्या आएगा? Input. इनपुट एनर्जी में क्या होगा? हम्म. New. हम्म. अरे बल्ब का इलेक्ट्रिकल होती है ना बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं ना बल्ब को. Ah, yes. सही है. एंड व्हाट शुड बी द आउटपुट? आपने सब Light बताना है. energy हाँ, लाइट होती है, और क्या होता है? and बल्ब आवाज वगैरह कुछ कर रहा होता है, वो ऐसा करता है कुछ? नहीं करता ना? नहीं करता ना? तो डेट मीन साउंड एनर्जी तो नहीं है ना उसमें. तो आप कोई और एनर्जी सोचें जो बल्ब खुद कर रहा होता है. और क्या होता है? गर्म भी हो जाता है, इट बिकम्स हॉट, राइट? सो yes. तो थर्मल एनर्जी हुई ना. ठीक है. और इज देयर एनी अदर एनर्जी दैट इज इन्वॉल्व? ठीक है, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इन द केस ऑफ बल्ब. अच्छा, अब चलो और कोई डिवाइस बताओ. अब कोई और डिवाइस सोचो. जी. हम्म. अम, और कौन कौन से हो सकती हैं डिवाइसेस? जनरेटर हो गया, बल्ब हो गया, फैन हो गया, राइट. हम्म. So अच्छा, और हम स्टीम बॉयलर कर सकते हैं, राइट? स्टीम बॉयलर. तो अगर हमारा इनपुट क्या होगा? इनपुट, हमारा इनपुट एनर्जी स्टीम thermal बॉयलर की क्या होगी? नहीं बेटा, thermal energy. वो तो बॉयलर है बेटा. बॉयलर से हमें तो थर्मल एनर्जी चाहिए, आउटपुट चाहिए. ठीक है. इनपुट हमारा इसका क्या हो सकता है? इनपुट स्टीम बॉयलर.
केमिकल इसको एनर्जी। आप इलेक्ट्रिकल, अगर ये इलेक्ट्रिकल स्टीम बॉयलर है ना, और इलेक्ट्रिकल बॉयलर है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी इनपुट। और अगर आपके पास कोई और केमिकल इन्वॉल्व हुआ हुआ है, देन द स्टीम इज क्रिएटेड, देन द केमिकल एनर्जी इज इन्वॉल्व। क्लियर? हम्म। यस। ठीक है। एंड व्हाट विल बी द यूजफुल एनर्जी? यहाँ पे यूजफुल एनर्जी थर्मल एनर्जी है। और डू यू थिंक देयर वुड बी एनी वेस्टेड एनर्जी? कोई वेस्टेड एनर्जी आपके माइंड में आ रहा है यहाँ पर? नहीं, वेस्टेड होती है, हो जाती है, क्योंकि थर्मल एनर्जी तो डिसिपेट हो रही होती है ना फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग से भी, सराउंडिंग की तरफ भी वेस्ट हो जाती है, नंबर वन। नंबर टू इज, हम्म। नंबर टू इज के कुछ बॉयलर्स में लाइट वगैरह होती है, ठीक है, लाइट वगैरह चल रही होती है। सो लाइट इज द वेस्टेड एनर्जी, वी डू नॉट वांट लाइट फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द बॉयलर। सो कुछ ना कुछ हम्म। एनर्जी तो लाइट को ऑन करने में तो गई है ना, तो दैट इज वेस्टेड अगेन, बिकॉज वी डू नॉट वांट दैट एनर्जी। हम तो नहीं चाहते कि लाइट लाइट को एनर्जी मिले, ठीक है। ऑल्दो उन्होंने फंक्शन जो रखा हुआ है कि वो लाइट इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कंप्लीट बॉइलिंग हो गई है, तो सो दैट दे कैन इंश्योर दैट द प्रोसेस इज डन, राइट? हम्म। ओके। एक और हमारे पास डिवाइस आ सकती है, दैट इज कैटापल्ट, राइट? ठीक है। तो इसकी मुझे आप बताएं कि इनपुट और आउटपुट क्या होगा। व्हाट शुड बी द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ कैटापल्ट? जी। हेलो। इलास्टिक यस, इलास्टिक, टेंशन। इलास्टिक। एंड द आउटपुट इज काइनेटिक। काइनेटिक। एक्सेलेंट, गुड। ठीक है, तो इनपुट इज इनपुट एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, या इलास्टिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं इसको, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड द आउटपुट इज काइनेटिक। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सिर्फ 2 मिनट बाद मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, कॉल कर लेना मुझे। ओके। राइट, सो व्हाट शुड बी द आउटपुट? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। वेल डन। ओके। अच्छा, डू यू थिंक there could be any other wasted form of energy? साउंड एनर्जी। Sound energy, good, wonderful, sound energy, ठीक है, that is wasted, okay, and it is dissipated, सही है। अच्छा, और कोई? Do you think sometimes it become heated, थोड़ा बहुत स्ट्रेच करने के बाद, और हम जब इसको पुल कर रहे होते हैं, देन जैसे हम इसको लीव करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो देन somehow the some of the
parts become hot due to the movement, due to the friction. Mm. Yes, so some of the heat energy is also involved. Clear? Any confusion now? Yes. Now is this clear? No. What is useful energy? What is wasted energy? What is dissipated? Acha, so we were calling this topic as a law of conservation of energy, and now we are going to state the law. Okay, do you think that the energy is created in any way from from one side of to another side? Do you think the energy is being created? Energy being created here? Mm. No. Okay. No. So energy is not created beta in any case, right? But it is being transferred from one form to another form. Okay. Clear? Yes. If you have 100 joule uh, amount of energy you have, okay, as an input, so your output would also be equal to 100 joule, but in a different form. Okay, if you add kinetic energy, sound energy, and heat energy, you will get 100 joule. Okay, but remember, all losses, all dissipated, all useful and wasted energy should be included. Then you will get 100%. Okay, Yes. so what are we going to conclude? That energy can neither be created nor be destroyed. Okay, are you getting my point? Okay, Mm. however, it can be transferred from one form to another form. Clear? It can be transferred from one Mm. form to another form. Done? Okay, Yes. and total energy total energy remains constant or same. Okay, Mm. that is, the input and output should always be equal. Okay, if output is not becoming equal, that means the loss is not included. Okay, whatever the loss energy or whatever the wasted energy, okay, that has been dissipated to the surrounding is not included in your calculation. Okay, if all losses are also included, then the input and output will also be equal. Is this clear to everyone? Yes, समझ आ गई ना आपको? Yes. चलिए जी, ठीक है. So till here we have completed law of conservation of energy, and now we are left with, I think, one topic of chapter number 3, and inshallah we will start chapter number 6. Okay. Mm.